ये मास्टरिंग का चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है। A 25-year-old has just had her 20-week scan and the fetus is found to have a hollow prosencephaly and a bilateral cleft palate. Cardiac ultrasound shows a VSD. Cardiac defect है इसमें ventricular septal defect. Which of the following is most likely to be associated with the ultrasound scan findings? तो इसका जो आंसर है कि होलो प्रोसेंसेफेली एंड जो VSTs हैं बायोटिक लेफ्ट पैलेट स्पेसिफिक टू द टाउ सिंड्रोम के साथ स्पेसिफिक। देन इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रेग्नेंट वुमन है हैज जस्ट हर 20 वीक एनॉमली स्कैन। Her baby is diagnosed with VSD and femur length is at the 5th centile. बेबी को कार्डिक डिफेक्ट है और फीमर लेंथ भी कम है, ठीक है। सो इसके लिए हम मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, परफॉर्म सीरियल ग्रोथ स्कैन्स, ऑफर डिलीवरी अरेंजमेंट्स टर्शियरी हॉस्पिटल एट 20 वीक्स, ऑफर एमनियोसेंटेसिस, offer termination of pregnancy for grounding, or E, offer a repeat of the cardiac scan at 32 weeks. तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी ऑफर करेंगे एमनियोसेंटेसिस। विल ऑफर एमनियोसेंटेसिस टू डायग्नोज, ठीक है। कार्डिक डिफेक्ट भी है, फीमर लेंथ जो है इज एट द 5th सेंटाइल, सो इसके लिए वी हैव टू डू एमनियोसेंटेसिस। Question number 19. A pregnant woman has just her 20-week anomaly scan. There is no obvious fetal anomaly scan on her scan, but the umbilical cord contains only 2 blood vessels. umbilical cord में सिर्फ 2 blood vessels हैं। तो अमूमन अगर कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई anomaly scan रिमार्केबल नहीं आता, एनॉमली स्कैन क्लियर आता है, तो पेशेंट को आप यू कैन से कि इतना इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता। बट इसमें आपने क्या करना है कि हमने सीरियल ग्रोथ स्कैन्स देखनी है बेबी की कि बेबी ग्रोथ कर रहा है या नहीं। तो इसमें ऑप्शंस आपने देखने हैं। ए, एमनियोसेंटेसिस फॉर कैरियोटाइपिंग, बी, रीएश्योर, सी, रेफरल टू टर्शियरी फीटल मेडिसिन यूनिट, की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ट्राइमेस्टर ग्रोथ स्कैन, यूनिटल क्रेनियल स्कैन, और ई, थर्ड ट्राइमेस्टर ग्रोथ स्कैन एंड यूनिटल रीनल एंड कार्डिक स्कैन। इट सीम्स राइट। इनकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का टाउ सिंड्रोम है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमने पढ़ा था कि हमने एक VSD और फीमर लेंथ शॉर्ट है, उसका आंसर एमनियोसेंटेसिस था एंड एक्सप्लेनेशन है। Up to 44% of congenital heart lesions that are associated with anomalies in one or more body systems. There is a strong association between congenital heart disease and aneuploidy, 35-48%. Amniocentesis should be offered to exclude an associated chromosomal abnormality. ठीक। And question number 19. Question number 19, single umbilical artery। तो उसमें था कि इसका आंसर जो है तो ट्राइमेस्टर ग्रोथ स्कैन देखेंगे एंड यूनिटल रीनल एंड कार्डिक स्कैन करेंगे। एन आइसोलेटेड सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी डज नॉट वारंट इन्वेसिव टेस्टिंग फॉर फीटल एन्यूप्लॉइडी बट कंसीडर द ट्राइमेस्टर अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर फीटल ग्रोथ करने के लिए वी विल हैव टू। अब इमरजेंसीज का चैप्टर 5 मास्टरिंग का है। क्वेश्चन नंबर 3, 27-year old Asian woman in her first pregnancy is known to have thalassemia major. 28 weeks pregnant है. She comes to emergency department with shortness of breath and has rapidly deteriorated. Despite resuscitation, she died within 20 minutes. A most likely cause of death thalassemia major में है because of excess blood transfusion. इनमें आयरन ओवरलोड हो जाता है, स्पेशली इन द कार्डिक मसल्स एज वेल, जिसकी वजह से कार्डिक फेलियर जो है मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, कार्डिक फेलियर।
एंड इसका क्वेश्चन नंबर 14 है 38-year-old woman of third pregnancy presents to the emergency department by 37 weeks of gestation with a stabbing pain in the epigastrium that radiates to the back and left arm. Most relevant laboratory marker to be requested. एक्यूट एमआई का सिनेरियो है तो उसमें हम ट्रोपोनिन आई कराते हैं, वी डू ट्रोपोनिन आई। इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थैलेसीमिया मेजर वाली पेशेंट जो थी कार्डिक फेलियर। कार्डिक फेलियर इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ इन ऑल 50% ऑफ थैलेसीमिया केसेस। All women should be assessed by cardiologist with expertise in thalassemia and iron overload prior to embarking on a pregnancy. An ECG, an electrocardiogram, and echocardiogram should be performed as well as T2 cardiac MRI. It's very important. Obstetric medicine का क्वेश्चन नंबर 1 है 29-year-old primary gravida in her first pregnancy attends the antenatal clinic at 32 weeks of gestation. She is fit and well with no comorbidities. She had a vasovagal fainting episode and underwent an ECG which was normal. Which of the following features would have prompted suspicion of an underlying abnormality? तो पेशेंट कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, पास्ट हिस्ट्री इनसिग्निफिकेंट है, अब ईसीजी भी नॉर्मल है, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी ईसीजी फाइंडिंग्स जो है वो सस्पिशियस होंगी। तो एट्रियल एक्टोपिक बीट्स, बी right shift in the QRS axis, or CST segment depression and T wave inversion and the inferior lateral leads. D small Q wave inverted T wave and lead 3, जबकि E ventricular ectopics हमसे सस्पिशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो है राइट शिफ्ट इन QRS एक्सिस, ये जो है सस्पिशियस। इन दिस केस के राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है एंड दिस राइट शिफ्ट हो जाता है इन द QRS एक्सिस। इसका ऑप्शन बी सही है। इसका क्वेश्चन नंबर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। One B shift in the right in the QRS axis. It's normal to see a left shift in QRS axis, but a right shift may indicate right ventricular hypertrophy. The right ventricle is enlarged and generate more electrical activity. इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, You have read the recent MBRRAC UK 2012 to 2014 report, Mother and Babies Reducing Risk. What's the leading cause of late maternal death? Early maternal death की बात नहीं करें, late in that report। तो इसका आंसर जो है A cardiac disease, B hemorrhage, C malignancy, D psychiatric causes और E thrombosis and thromboembolism। तो इसमें जो इसका cause होगा वो that will be C malignancy। Question number 5. You have been fast bleep to the accident emergency department to attend a woman who is 28 weeks pregnant and had just cardiac arrest. She requires a perimortem cesarean section. What's the most essential piece of equipment to start this surgery? Surgery without anesthesia करते हैं, just scalpel होना चाहिए आपके पास and करते हैं perimortem cesarean section within 5 minutes of the cardiac arrest to ease doing cardiopulmonary resuscitation. Question number 12 है इसका, A woman with a BMI of 37 kg per meter square and asthma had an elective cesarean section for breech at term with a blood loss 1300 ml. She was discharged 3 days later.
1 week later, she became acutely short of breath and collapsed. It's the most likely diagnosis. उसका BMI कितना ज़्यादा है? 37 किलोग्राम. She has asthma as well. इलेक्टिव C-सेक्शन हुआ था. ब्लड लॉस 1300 ml. लाइक वो पोस्टमार्टम हेमरेज में गई थी. And she was discharged 3 days later. तो इसके ऑप्शंस हैं: A acute asthma, B CCF, C fulminating sepsis, D pulmonary embolism और E supraventricular tachycardia. पेशेंट वुमन इतनी हाई BMI पे पोस्ट सिजेरियन अगर वो इमोबिलाइज होते हैं या उनमें ज़्यादातर जब पोस्टमार्टम हेमरेज होता है वो पेशेंट्स ये कोलैप्स करते हैं विदिन द फर्स्ट 6 weeks postnatally, mainly because of pulmonary embolism. D. इसका क्वेश्चन नंबर 26 है. What is the most common cardiac cause of late maternal death in the UK in the latest MBRRACE UK report? अब इसका जो लेट मैटरनल डेथ है एंड दैट्स बिकॉज ऑफ कॉमन कार्डिक कॉज. तो इसका जो कॉज है वो अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एओर्टिक डायसेक्शन, कार्डियोमायोपैथी या माइट्रल वाल्व थ्रोम्बोसिस या सडन एरिथमिक कार्डिक डेथ्स विद अ मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल हार्ट. तो इसका जो आंसर है वो ई है. इसकी एक्सप्लेनेशन में कर लेते हैं. 27. A previously well 37-year-old patient है with mitral valve who is anticoagulated, present at 15 weeks gestation with a cold day and an acute onset of cough, frothy pink sputum. She becomes short of breath and deteriorates very rapidly and has a cardiac arrest. Pink frothy sputum pulmonary hypertension, pulmonary edema उसकी वजह से है and at postmortem is the most likely cause of death. तो पोस्टमार्टम ये एक्चुअली माइट्रल वाल्व हर्ट जो पेशेंट्स होते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इनमें ड्यू टू हार्ट फेलियर होता है. क्वेश्चन नंबर 28. A previously well 26-year-old UK born woman presents to an antenatal clinic at 18-week gestation with a history of palpitations and recent week. Most likely diagnosis. तो ये पेशेंट जो इसको प्रीवियसली कोई ऐसे हिस्ट्री नहीं थी एंड 18 वीक्स जेस्टेशन पे आई है. हिस्ट्री ऑफ पैल्पिटेशंस. तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इसका एंजाइटी डिसऑर्डर्स या एक्टोपिक कार्डिक बीट्स या प्रीवियस रूमेटिक फीवर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या थायरोटॉक्सिकोसिस. इसका आंसर भी है एक्टोपिक कार्डिक बीट्स. Question number 29. A 31-year-old smoker with no medical history comes for booking in the antenatal clinic with a systolic murmur is heard. What's the most likely diagnosis? Systolic murmur, ejection systolic murmur basically. तो ये फ्लो मर्मर प्रेगनेंसी है. ठीक है. Question number 30. A 34-year-old woman who books in a pregnancy with a history of her mother dying of heart attack 39 years old and her maternal grandfather dying of a heart attack 38 years old. Her 27-year-old brother had recently had a cardiac arrest while playing football but survived after resuscitation. Most likely condition which increases her risk of dying. इसमें है congenital cardiac disease, B clotting disorders, B hypercholesterolemia, D inherited cardiomyopathy और E was Parkinson-White syndrome. बेसिकली इनहेरिटेड जो कार्डियोमायोपैथीज हैं इसकी वजह से she has increased chance of morbidity mortality. And 32 पे क्वेश्चन है. In 2012-24 corporation inquiry report, what was the rate of the most common cause of death?
तो जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है दैट्स कार्डिक डिजीज़ एट अ रेट ऑफ 2.18 per 100,000 मैटर्निटीज़। अब इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से। कि मैलिग्नेंसी जो था लेट मैटरनल डेथ का कॉमन कॉज था और कार्डिक डिजीज़ जो है लीडिंग कॉज ऑफ इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। स्केपर चाहिए होता है पोस्टमार्टम से पेरीमार्टम सीजन सेक्शन के लिए। द ओनली एसेंशियल इक्विपमेंट टू स्टार्ट अ पेरीमार्टम सेक्शन इज अ mounted scalpel. This should ideally be pre-mounted to be under resuscitation trolley. Cord clamps should be available but can be replaced with such a material. If cord clamps are not available, there may not be a time for anesthesia. There will be minimal bleeding as the patient does not have a circulation. Question number 12. High BMI patient pulmonary embolism. इसका आंसर था risk factors for pulmonary embolism including elevated BMI, operative delivery, postpartum hemorrhage, post-surgical immobility. Majority of pulmonary emboli occur in the first 6 weeks postnatally. Question number 26 है sudden arrhythmic cardiac death with a morphologically normal heart. Cardiovascular disease was the leading cause of maternal death in the UK. Over a quarter of women who died in pregnancy or up to 6 weeks after pregnancy. Sudden arrhythmic deaths was the main cause of death in 38% of cardiac patients. All women dying from sudden cardiac arrest with a morphologically normal heart should have molecular studies done at post-mortem with the potential for family screening. 27 का हार्ट फेलियर इज अ की likely to be secondary to mitral valve stenosis. Question number 28. Ectopic cardiac beats. Ectopic beats are very common in everyone. Increase in pregnancy coupled with increase in heart rate of pregnancy. This can be symptomatic. In pregnancy, the heart rate increases by 25%. The sinus tachycardia, particularly in the third trimester, is not uncommon. Ectopic beats and sustained arrhythmias are encountered in more than 50% of pregnant women and investigated for palpitations. Okay, so ectopic beats जो है they are 50%, जबकि SVT 25%. In pregnancy the heart rate increase by 25%. The जो sinus tachycardia है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है मतलब कॉमन हो जाता है स्विचिंग, बट मोर देन दैट ectopic beats. Most of these are benign sinus tachycardia or bradycardia or atrial and ventricular ectopic beats. Sustained tachycardia are less common at around 2 to 3 per thousand. In general, arrhythmias in pregnancy can be managed safely, conservatively or medically with little risk to mother or fetus. And during pregnancy, treatment should be initiated only for severe symptoms or hemodynamic compromise. Okay, so हमारे पास जो मर्मर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29 इसका है फ्लो मर्मर ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन हार्ट रेट फ्लो मर्मर्स आर कॉमन. फ्लो मर्मर्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 इनहेरिटेड कार्डियोमायोपैथी. अर्ली सडन डेथ इज अ फीचर ऑफ इनहेरिटेड कार्डियोमायोपैथी. एंड क्वेश्चन नंबर 32 है कार्डियक डिजीज इज अ रेट ऑफ 2.18 per 100,000 maternities. And 2/3 of maternal mortality is due to a medical and mental health condition or